today we are going to see the next question in this 30 days of code, that is scope. So read the question properly. So here in this they are giving an input number of elements in the vector. So they are giving a vector. So इस वेक्टर में ये सारे 3 एलिमेंट्स है. ओके, सो एंड दे आर रिटर्निंग द आउटपुट लाइक दे आर प्रिंटिंग द मैक्सिमम डिफरेंस. या सो इधर उन्होंने एक्सप्लेनेशन में बताया लाइक दे आर टेकिंग द मैक्सिमम डिफरेंस. सो अगर नॉर्मल वे में हम थिंकिंग करें तो हम सभी एलिमेंट्स का मीन्स इन्होंने जैसे बताया इधर एक्सप्लेनेशन में 1 और 2 में का डिफरेंस निकालेंगे, फिर 1 और 5 में का, फिर 2 और 5 में का डिफरेंस निकाल के चेक करेंगे और जो मैक्सिमम है वो प्रिंट करेंगे. सो ऐसा नहीं सोचते हुए हम करेंगे क्या, हम वेक्टर सॉर्ट करके लेंगे. ओके, तो सॉर्ट करने पर हमारा पहला एलिमेंट होगा वो सबसे मिनिमम होगा और जो लास्ट एलिमेंट होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा. अगर इन दोनों में का डिफरेंस हम रिटर्न करेंगे वो तो वो सबसे मैक्सिमम होगा. सो दैट इज द थिंग. सो वी आर गोइंग टू सॉर्ट द vector and just we are returning the difference of first element and last element. Okay, so here we will go to write code. So here in this function we have to write the complete the class of difference. Okay, so here compute difference में से और maximum difference उन्होंने print किया है. Okay, so here in this difference, so here they have created a vector which is private because उन्होंने उनको vector दिखाना नहीं है, and they have written this in public maximum difference because they are accessing maximum difference from the function. So that's why they have created this in public. So now we have to write the code. For that first of all we have to write the constructor. Here they are passing the vector. So हमें vector copy करके इस vector में लेना है जो कि इधर हमने declare किया है. For that I will write the constructor difference and we are taking vector of integers like v. तो इसमें अभी हमें इनिशियलाइज करना है एलिमेंट्स को v के साथ. So I will directly initialize with v. Okay, so ये हमने कर लिया. So now we have to sort these elements. जो वेक्टर है हमें वो सॉर्ट करना है. For that there is the sort function that takes elements dot begin, means start of the vector and end of the vector, elements dot end. Okay, so this is the sort function, means ये sort function sort करके देता है और elements के vector को sort करता है. So अभी हमारा vector sort हुआ है. So now we have to write the function compute difference. Okay, so for that I will write function void compute difference because we don't want to return anything. So that's why we are returning writing void as a return type. So simply here what we want to do, we want to initialize this maximum difference. इस maximum difference को हमें initialize कर देना है जो कि हम maximum difference निकालेंगे. Okay, maximum difference is equal to elements. Okay, elements में से अभी last वाला position. So we want to find this last position. So for that we want the index of last position. So for that elements dot size. Okay, so elements dot size करने के बाद हमें पूरे वेक्टर का साइज पता चलेगा. उसमें से हमें -1 करना है because the array vector starts from the 0. Okay, so that is minus elements of 0. I think, yeah, we want the first position, so that's why we are minusing first position. Okay, so I think it will work now. So what is happening here? Okay, so this is the function. Okay, so I think this is missing. So okay, that's not thing. Okay, so we will run the code now. I think it should work. Yeah, it is working. So that is the simple thing, means we have to sort the vector and we want to find the maximum difference using just only one difference. So बार बार difference करने की बजाय ये वाला simple था.
ओके, थैंक यू. इफ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब, शेयर, क्या करना है भाई करो प्लीज़.